Hello and welcome back to my YouTube channel. So we'll be solving question number 19 today of pre-RMO 2014. So it says let x1, x2 up till x 2014 be the real numbers different from 1 such that their sum is equals to 1 and x1 upon 1 minus x1 plus x2 upon 1 minus x2 up till x to the 2014 upon 1 minus x 2014 is equals to 1. Okay, then we need to find out value of this function. Okay. So first of all, we'll write down what is given to us. So it is given to us that x1 plus x2 up till x 2014 is equals to 1. So can I write it as summation I goes to 1 to 2014 xi will be equal to 1. So let this be first equation. Then we are having x1 upon 1 minus x1 plus x2 upon 1 minus x2 up till x 2014 upon 1 minus x 2014 is also equal to 1. So again I can write it as summation I goes from 1 to 2014 xi upon 1 minus xi. So this is also equal to 1. Now we need to find out x1 square upon 1 minus x1, x2 square upon 1 minus x2. So x1 square upon 1 minus x1 plus x2 square upon 1 minus x2 up till x 2014 square upon 1 minus x 2014. So basically what we need to find out is I goes from 1 to 2014. I need to find out xi square upon 1 minus xi. So I can also write it as I goes from 1 to 2014 xi plus xi square minus xi. So if I'm adding this term, I am subtracting this term. So there is no change in the given system. There is no change in the given system. So now I can write, I can split the numerator. I can split the numerator as xi upon 1 minus xi plus what I can do is I can take xi common and we'll be left out with xi minus 1 upon 1 minus xi, right? So what is the value of this? We are getting this value as 1. So I'm getting this value as 1 plus I can cancel out these two terms with a negative sign. So it will be I 2014 with a negative xi, or I can also write it as 1 negative summation I goes to 1 2014 xi. And what is the value of it? From the first equation we have value as 1. So it is 1 minus 1 which is equals to 0. So this is your required solution. तो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. हमारे को गिवन था ये रिलेशन, इससे हमने एक जनरलाइज टर्म निकाल लिया. सिमिलरली सेकंड जो चीज़ गिवन थी उससे हमने जनरलाइज टर्म निकाल लिया. 1 एंड 2 को हमने इस स्टेटमेंट को यूटिलाइज करा, तो यहाँ से पहली बार आया हमारे पास फ्रॉम 2 और ये जो रिलेशन आया ये आया हमारे पास फ्रॉम 1. तो हमने वैल्यूज पुट करी, कैंसिल आउट हो गई, फाइनल आंसर इज 0. आई होप सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. What is the number of ordered pairs A comma B where A and B are subsets of 1, 2, 3, 4, 5 such that neither A is a subset of B nor B is a subset of A? Okay, so this is quite an interesting question again. तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको अप्रोच करेंगे एंड आई विल गिव यू प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. एक स्टेप से मैं आपको समझाऊंगा इस चीज़ के अंदर कि हम कर क्या रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट. So we will assume let X denote set of all ordered pairs A comma B when A is set of B, and Y denote
set of all ordered pairs A comma B when B is subset of A. ओके तो अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स नॉट इंटरसेक्शन वाई नॉट. So I can also write it as number of total elements minus number of elements of X union Y. And what is X union Y? What is X union Y? It can be written as nx plus ny minus nx intersection y. So this is what we need to find out, that ns minus n of x minus n of y plus n of x intersection y. So if we are able to calculate out these values, हमारा आंसर आ जाएगा. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 की बात कर रहा है. तो आई कैन से नंबर ऑफ subsets of 1 to 5 can be given as 2 to the power 5, right? तो 2 to the power 5 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं. सो हेंस there are 2 to the power 5 ways to select A and 2 to the power 5 ways to select B, right? कि A को select करने के भी इतने number of ways हैं, B को भी select करने को इतने number of ways हैं. Since subsets A, B can be selected independently, they can be selected independently. So here 2 to the power 5 into 2 to the power 5, that is 2 to the power 10, will be ordered pairs of subsets A comma B, right? तो हमारे पास ns की वैल्यू कितनी आ गई, 2 to the power 10. Now we need to find out value of nx. अब हमें nx की वैल्यू निकालनी है, ठीक. So if A is a subset of B, there are 3 possibilities. There are 3 possibilities for each of कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 5 एलिमेंट्स हैं. Each of 5 elements in set 1 to 5, that is either it is in set A or in set B minus A, or neither a subset, or neither a subset. So thus there are 3 to the power 5 ordered pairs A comma B with A being subset of B, right? Now because of symmetry, अब यही सेम चीज B के लिए भी हो रही होगी. So by symmetry I can say, by symmetry, when B is a subset of A, there are 3 to the power 5 ordered pairs A comma B with B being subset of A. So we have find out value of ns, nx, ny. अब हमें nx intersection y चाहिए, हमें nx intersection y चाहिए. So if A is a subset of B and B is a subset of A, so I can say this is nothing but A equal to B. ये दोनों एक ही चीज़ है. Since each of 5 elements of set
are either in A or not in A. There are 2 to the power 5 ordered pairs A comma B when A is equals to B. So now we have all the values. अब हमें निकालना क्या था, n x intersection x not intersection y, no. So ns की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 2 to the power 10, then 3 to the power 5, then 3 to the power 5, and then plus 2 to the power 5. So this will be your final result. तो इसको if we try to simplify this part, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी 570. So this will be your final result. तो मैंने बिल्कुल डिटेल्ड वे में समझाया है कि हमने एलिमेंट्स को कैसे सेलेक्ट किया है, कैसे उनकी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं उन सेट के अंदर. तो आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा इस चीज़ को. कहीं दिक्कत हो, लेट मी नो, हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेंगे. आई होप सॉल्यूशन इज़ क्लियर टू ईच एंड एवरी.